ये पिक्चर थोड़ी हार्ड लग रही है, हार्ड वाली चूज की है आपने? यस। सर मैं रैंडमली चूज की थी, मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो शायद अब नेक्स्ट वाली यही आ गई है। यस सर, मीटिंग लाइव होती है। ओके, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि इसको ना उर्दू में डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे पास कुछ बोलने के लिए आइडियाज आ जाए, और फिर हम स्पीकिंग स्टार्ट करते हैं। यस श्योर। अच्छा, मेरे इंटरनेट स्लो होने की वजह से ना मुझे थोड़ा सा ब्लरी नजर आ रहा है। तो ये दोनों फीमेल्स हैं ना? यस यस सर, फीमेल। दोनों फीमेल्स हैं। ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम क्या कहेंगे कि ओके सर सिकंदर, आप चेंज कर दें या इसी के साथ ही प्रोसीड करना चाहिए। पिक्चर मैम मैं चेंज कर दूं या आप क्या कहना चाहते हैं? ओके चलिए, लेट्स, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं ना, दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच देयर मसल्स। जी जी बिल्कुल, ये सर वार्म अप कर रहे हैं इनके एक्सरसाइज करने से पहले या रनिंग करने से पहले या जॉगिंग करने से पहले। This picture is about a yoga practice where two women are actually practicing for yoga, and they are in their yoga dress, and it's a scene of sunset. In the background, we are actually looking some trees over there. इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी 110 वर्ड्स नहीं हुए। Yes. Okay, in this photo, there are two women who are actually exercising, and they seem to appear in yoga dresses, and one of them is stretching her front leg, uh, and the other one is just copying her. Scene looks serene, and it's actually a sunset. So the tree over, as in the background, we are looking a tree over here. It's a green tree, and uh, the environment looks pretty calm. And yes, they are having a good time to exercise for the rest of their day. बाकी आप इसमें अपना ऐड करें। जो चीजें आपने मेंशन की हैं इसके अलावा तो हमें भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कुछ इसको एक्सप्लेन कर सके। आई थिंक यहाँ पे पीछे जो है वो है, लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बट आप उन्हें ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि अगर वो जल रही होती या इस तरह से कुछ होता तो आप उसको एक्सप्लेन कर देते कि अच्छा वो स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो दे आर एक्चुअली लाइटिंग अप, या इस तरह से कुछ चीज़ है। बाकी आप पेरेंट्स बता सकते हैं कि these girls are actually in their yoga dresses and they are wearing joggers, and one is with a ponytail and the other one is थोड़ी blurry है, but yes, that's what it is. कोई और पार्टिसिपेंट प्लीज इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा? जी सर, सिकंदर आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? ये इसमें ना जी मतलब मैं इसको तैयारी तो मैंने नहीं की हुई ना, मुझे इसका पता है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पिक्चर को देखें ना तो ये कहाँ पे
ली गई है। ये देखिए, ये कोई बीच लग रही है, पीछे आपको पानी नजर आ रहा है, पीछे आपको सूरज नजर आ रहा है, तो ये मॉर्निंग रूटीन है, राइट? तो ये चीजें ये वी कैन मेंशन दैट दे look to be doing yoga or doing physical exercises in the morning. It looks to be a beach as we can see water in the background. So if you want to collect more words, we need to see what all is evident from this picture, right? And I'm not sure if you can talk about yoga being a good practice in the morning, but overall you can see that, right? And what I would feel is that once you guys talk here, try to talk more things in English. That's how we can. Uh, that's one way to improve. So Yes, exactly. no, even if once I speak in English, I'm not very fluent, right? You can see that. But still, it's something that if I'm preparing for that, I would go for this. But yeah, overall, you can also talk of the environment, that which environment they are in which environment they are present. Right? Yeah. Sikandar, you wanted to. जी सर, मैंने एक बुक शेयर की है जो हम स्टार्ट में इसको एज अ यूज कर सकते हैं चैट में, तो मैं उसे रीड आउट कर देता हूँ। मे बी मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर हो। इन दिस captivating photograph, a close-knit circle of friends is seen sharing a joyous moment amidst the warm exercise, framed by towering trees and a crystal clear sky near Serene River. हाँ बिल्कुल, मतलब they talked about the environment where they are. So these the way this book describes it, it's a little tough, right? I cannot articulate such a sentence, but still we should be able to give some basic information in English about this environment, these people, and what they are doing. And the more you practice, if the same thing I will say twice, I will be a little bit more fluent relative to the first time once I say that, right? And how you can practice this is, right, once you are in your daily routine, once you are going out, you see a couple of cars parked, try to construct sentences that, okay, if somebody gives me this, how I will describe this. So that's one way that we can practice more and we can improve, right? It's language is like swimming, right? Till the time you don't do it, you don't learn it. Swimming people, other there are swimming people give more examples, because till the time you don't get into the water, you would never learn how to swim, right? How much you do, how much you study, how much videos you see, once the first time you will get into water, you won't be able to swim. You have to take some time to acclimatize yourself. So yeah, that's how uh, we should approach it. But yeah, you guys are doing well. Try to inculcate it in your daily routine, not only in the class, right? It's part make it a part of your make it a part of your daily life once you are preparing for IELTS, right? Not everything, but at least here, right? Try to, these things are common to find. You don't need to be in a class to practice. Whatsoever you see and you have time, you can think about that. In our daily time, we have free time. So on those free times, you can think about this. You see this, you will see a couple of examples, right, in today's class. During the day, whenever you find time, right, try to think more about it and try to construct sentences. Even the something that you said now, it's fine. Just repeat it so that you are a little bit more fluent. Okay. Yeah. Thanks. Please go ahead. Thank you so much. So कोई इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहता है? Anybody here to add more to this? Or
can jump over to another. अच्छा मैम, जो स्टनिंग वर्ड है वो बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं? जैसे विब्रेंट वर्ड जो है वो जिस वक्त हम कलरफुल चीजों की बात कर रहे होते हैं जी जी। तो हम उस वक्त यूज करते हैं। तो स्टनिंग का कोई आइडिया है किस वक्त यूज करते हैं? स्टनिंग का मतलब होता है कि कोई हैरानकुन चीज। स्टनिंग, यस, जो आपको कोई चीज चौंका दे। स्टनिंग। ओके, उसकी कोई एग्जांपल दे सकती हैं? यस, द ड्रेस लुक्स स्टनिंग, दिस पिक्चर लुक्स स्टनिंग। लाइक जो आपको हैरान कर दे, वॉन्डर में डाल दे, आपको अमेज कर दे चीज। तो हम इस पिक्चर को भी तो स्टनिंग बोल सकते हैं। यस यस यस, हम इसके अंदर ये एडजेक्टिव डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, इन दिस स्टनिंग फोटोग्राफ two females are performing daily routine exercise यस यस। while their poses suggesting that they are professional in it, and they are performing these tasks on a beach area, as we can see water in the background, as well as there are huge lush green trees in the background. यस। Moreover, the one of them is wearing orange dress and the other female, उसके कलर्स का पता ही नहीं चल रहा। It's blue jeans and yes, the shirt isn't visible well enough. यस, और स्टार्ट में बस एक चीज ऐड कर सकते हैं कि जिस वक्त मैं बात कर रहा था कि डेली रूटीन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो मॉर्निंग की एग्जांपल दे सकते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि मेरे माइंड में कोई वर्ड्स नहीं है। So you attempted really well. So Sikandar, do you want to give it a try? यस मैम। आप मैम मुझे आपकी आवाज कट की दोबारा बता सकते हैं आपने क्या बोला? आप इसी को एनहेंस करना चाहेंगे या एलाबोरेट करना चाहेंगे? नो मैम, नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। इस पे तो हम काफी दफा बोल चुके हैं। Yes. ये भी फिर मैं सर हो चुका है। आप वो टेम्प ईमेल से आई थिंक करेंगे तो देन उससे नहीं आएगी। मैम एक्चुअली आप टैप मेल से भी जब जनरेट करते हैं ना तो तब ये एक ही सीक्वेंस में देते हैं। आप चाहे जितनी मर्जी टैम्प के लिए यूज कर लें, जो सा मर्जी आप ईमेल यूज कर लें, तो इनकी एक सीक्वेंस बनी हुई है, ये शफल करके नहीं आते। ठीक है ठीक है, ये आइडिया नया है। ओके, इसको मैं स्टार्ट करती हूँ। This photo, there are two young people over here who seems to be playing with their games, some sort of games, and मैम इफ यू डोंट माइंड आप प्लीज दोबारा से शुरू कर दें, मुझे समझ नहीं लगी क्या कहा आपने। in this photo there are two young people, and both of them are playing video games, sort of, and they are actually looking at the TV screen as it appears. They are looking at some TV screen, and the scene, they are really enjoying the
current moment. And yes, one of them is wearing joggings in a cozy dress, and the boy is wearing t-shirt and jeans, and it appears that they are having their leisure time with each other. Yes, and they are sitting over a sofa. Yes, और सोफा का कलर? the color of the sofa is of I think, olive color. So, Sama, please go ahead. यस सर, सिकंदर पहले आप कर लें. सर एक्चुअली आप जाएं पहले, आप जरा पहले इसको जरा करें, लास्ट पे मैं करूंगा. ओके. एक्चुअली मेरी तरफ अजान हो रही है, तो आप काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा, मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ. तो सर सामा उसी को enhance कर रहे हैं जो what I have said. In this stunning photograph, सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा. Sure. In this stunning photograph, two persons are playing video games using controllers while they are sitting on the sofa and looking at the TV screen. On the other hand, their expressions are suggesting that they are really enjoying this moment, and they sit ये क्लोज बैठे हैं, इसको कैसे कहेंगे? They are They are sitting sitting next to closely each other. and Next to each other. they are next to each other, and it is suggesting that they are a couple or siblings. Yes. Okay. Right. It's available right now. It's our last week, and the class strength is very low today. So actually, we have to move with ourselves. Okay. So Sikander, can you please mind to change this photo, please? सॉरी मैम, दोबारा बताइएगा. पिक्चर चेंज करेंगे शफल करें. आई थिंक सर सिकंदर की बारी है. जी मैम, मैं अगर इसको ट्राई कर लूँ. ओके ओके श्योर श्योर श्योर. ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपना. This photo captures a poignant moment between a sister and a brother, evoking a sense of affection and unconditional love. The young charismatic brown-haired girl and a boy enjoying a video game, sitting on a sofa, sitting on a yellow sofa. Yes yes. Okay, and maybe बस मैम मेरा इतना ही है. ओके 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 ठीक है. हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं. This is what we have practiced. Okay. Uh,
Can I start? Yes, please, ma'am. In this photo, it appears to be, it looks like a classroom where two young children are actually enjoying their class. And it appears that they are not only enjoying their class, but they are in their active participation mode, where one of the female young child is raising her hand, and maybe she's asking some question, while the boy sitting next to her uh, is just laughing, and maybe they have some funny moment over there. So in the background we are looking some study material, like it appear that it seems to be a library or a bookshelf near to them, and they are sitting on chairs, comfortable chairs, and next to a desk, which is having some books over there. So yes, it's a classroom environment, and these two young children are actually enjoying the learning, and it's and it looks like they are having a good time during their class. That's it. Yes. There's a good there. Now, can you please start? सॉरी मैम दोबारा बताइएगा। आप ट्राई करेंगे? Like, जी मैम मैं फिलहाल जरा सोच ही रहा था, जी जी जी। तो ट्राई कर लेते हैं इसको। ओके, दिस इमेज depicts this image depicts that two children are in a class. Very good. Uh, And then मैम आप मुझे थोड़ा इंग्लिश नहीं बन रही, तो मैं थोड़ा लिख के ट्राई कर लूँ। ओके। सबसे पहले एक सजेशन प्लीज मैं ऐड करूं। जी जी मैम जरूर। वैसे मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी अटेम्प्ट, बट यस, अब जैसे आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया फर्स्ट सेंटेंस को, this in this photo depicts that two young children are in the classroom. देन आप इसी को आगे से एलाबोरेट करें कि वो क्लासरूम में क्या कर रहे हैं। जैसे जो यंग जो गर्ल है, वो रेज उसने हैंड रेज किया हुआ है, मे बी शी इज आस्किंग सम क्वेश्चन, इस तरह से करके। मैम मैं चाहता हूँ थोड़ी सी वोकैबलरी ऐड कर ली जाए, ओके, ताकि हमारा स्कोर थोड़ा ऐड हो जाए, थोड़ा ना इंक्रीज हो जाए। फॉर श्योर। कि जो सिंपल जब हम देते हैं, जो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, तो वो फिर स्कोर हमें दे देता है 110 से 100 से 110 की रेंज में। श्योर श्योर श्योर। जी, तो मैं वही वोकैबलरी देख रहा था। तो अगर आप कुछ वो कहते होते हैं ना, जैसे वो हाई वोकैबलरी वाले वर्ड जिसमें थोड़े से ऐड करते हैं। वाइब्रेंट आप यूज कर सकते हैं, वाइब्रेंट हम यूज कर सकते हैं, एंड हम यूज कर सकते हैं इट्स अ sophisticated classroom. It appears to be a sophisticated classroom where there is one shelf at one end of the room, and there are some flower pots over there. सर से करके जैसे मैम जैसे मैंने ये कुछ बुक्स ली थी मैम मोमिना से, तो इनमें मुझे एक चीज नजर आई थी
तो शायद यहाँ पे फिट बैठ जाए। इन दिस captivating photo one can observe an array of vivid colors merging harmoniously। तो मैम स्टार्ट में हम ये वाली ऐड कर सकते हैं वाला लाइन। सॉरी, आपने उसको प्लीज रिज्यूम करें। लास्ट से मैं नहीं पढ़ पाई। विविड कलर्स नहीं, यहाँ पे हमें विविड कलर्स उस तरह से, लाइक अगर ये किसी गार्डन का सीन होता, या आप इस तरह से कुछ होता कि जहाँ पे हमें वाकई में बहुत ही क्लियरली कलर्स नजर आ रहे होते, देन हम कह सकते थे कि इन दिस कैप्टिवेटिंग फोटो वन कैन ऑब्जर्व एन array of vivid colors merging harmoniously। ओके, चलें तो ये हम फोर्थ वाला कुछ देख सकते हैं। दिस फोटो कैप्चर्स ए poignant moment between poignant moment तक आप करते हैं, देन आगे आप करते हैं कि captures a poignant moment of a classroom where two young children are actually learning some lesson। तो सरसामा आपको क्या कहना है। Sir Susama isn't available right now। Sir Sikandar, you just don't need to be perfect, just go with the flow and yes। ओके, in this image or we can say this image shows that there are two children are in a modern classroom। Yes, yes, good। Okay, brown girl a brown hair girl raising her hand to ask a question, as well as a younger boy also raised his hand to ask or explain his answer। एंड बाकी आप बैकग्राउंड को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। Okay, in the background there are shelf of books. There are shelf of books, and roughly middle in the shelf there are a room plant। ठीक है। मेरे माइंड में तो मैम बस यही कुछ आया है, बाकी अगर आप इसमें कुछ ऐड कर दें और। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दें कि वो फर्नीचर पर बैठे हुए हैं। यस, देन आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा, हमारे वर्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे 90 तो मैम अगर जब स्टार्ट में उनको बोला है कि वो एक क्लासरूम में है और उन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है, तो इनको अलग मेंशन करना है कि ये बैठे हुए हैं। यस, अगर हमारे पास अभी जैसे कुछ अगर टाइम बच जाता है तो हम उसको उस तरह से कर सकते हैं, एडिशन बीच में कर सकते हैं। ओके मैम। यस। मैम नेक्स्ट पे चले। चलें, ठीक है। ठीक। Next।
In this image, two people are actually having an exchange of some files, and they are sitting in a corporate dress while the environment looks like it's a meeting where they are having an exchange of thoughts, and they are exchanging with each another the files. Moreover, one of them looks like she's a lady, and she is having a tablet with her, and it's a calm environment, and both of the people are having their coffees right in front of them. The lady also has a black file. She is wearing a black coat as well. So it appears that they are having some serious discussion over some topic, and they are uh, exchanging ideas with each other, and exploring and importing important documents at the moment. Yes. The next Sir Sikandar or any participant can try out. कमेंट में अगर मैम हम इसको ऐसे कह देंगे कोई बिजनेस डील कर रहे हैं, Yes, yes, yes. यानी कि अपने ऑफिस में बैठे हैं और अपनी कोई बिजनेस डील कर, Yes. तो बिजनेस डील के बाद वो उनको डॉक्यूमेंट है वो उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, जी 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 जी. और दोनों ने सूट से लगता है कि जैसे उन्होंने बिजनेस सूट पहना हुआ है, इनके पैंट कोट पहना हुआ है। जी जी जी. या हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन अपने दूसरी सेक्रेटरी को कुछ डॉक्यूमेंट कहीं भेजने के लिए दे रहा है। Yes. Yes. इसी को आप अपने इम्प्रूव वर्जन में आप बोलें. चले मैं ट्राई करता। Yes, yes, sure. This image shows a close-up view of a business setting involving two persons. The persons are seated at a wooden table, each dressed in dark suits, suggesting a formal or professional environment. One person whose hands are visible in the lower part of the image is handing over a large yellow envelope to the other person. Maybe they both are a boss and a secretary, and boss is giving the envelope to her And secretary excuse me. to send this information to other persons or other chairpersons of company. Yes, ma'am. सर सिकंदर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है. आप प्लीज काइंडली रीशेयर कर सकते हैं. वैसे मुझे विजिबल हो रही है, बट हमारे एक पार्टिसिपेंट को नहीं विजिबल हो रही. मैसेज किया. ओके, तो अब विजिबल मैम? सर उस्मान आपको विजिबल हो रही है? यस 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 विजिबल. मैंने वैसे मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ था साथ, तो मुझे तो विजिबल ही थी। तो कोई और पार्टी इसमें कुछ बोलना चाहे? सर जुनेद आप बोलना चाहेंगे? सर उस्मान.
Please just try it out. It doesn't need to be perfect in one go. Just try करें. Yes. जिस में मैं ट्राई करता हूँ जस्ट मुझे 20 सेकंड्स दें ताकि मैं प्रिपेयर हो लूँ. Okay. This photograph depicts a professional setting of an office uh, where two professionals are sitting both sides of their table. The table is placed at the center of them. Uh, it seems like they are doing a business deal. On the left side of the image, the person who is sitting at the left holding a envelope, and it looks like it is giving to the other person, and the person sitting on the right, sitting on the left side of the table, uh, having his one hand on his phone and holding the envelope from the other hand. Uh, on the right side of the on the top of the image, there are some files placed on the table. Also there is a cup of black coffee is placed there. Overall, this looks like a professional setting in a professional manner. Very good attempt, Sir Junaid. Yes, it was a very good attempt. Sir Usman, do you want to try? Sir Usman, am I audible to you? मैम उनका if मैसेज आया चैट में, आई एम आउट ऑफ डोर मैम, सो आई एम नॉट अवेलेबल फॉर वॉइस. Okay. चलिए कोई बात नहीं सर, नेक्स्ट पे मूव करते हैं. I think it's very easy for you people. इजी तो मैम कुछ भी नहीं होता. Okay. It's what game is it? Sir Junaid, Sir Sikandar, what game is it? I think it's football or volleyball, what you can say. मैम ये बास्केटबॉल है. बास्केटबॉल. देखिए आपको पता तो है सर सिकंदर. मैम मुझे गेम का पता है, मुझे थीम का नहीं पता किसके ऊपर बोलना कैसे है. ओके मैम मैं ट्राई करूँ? ओके श्योर श्योर सर जुनैद. ओके, मुझे जस्ट 20 सेकंड्स दें ताकि मैं प्रिपेयर हो जाऊँ. ठीक ठीक है. This stunning photograph depicts a young boy playing basketball in a field surrounded by green mountains in a sunny day. It looks like uh, he is a good player of basketball and is practicing to excel and polish his abilities to play basketball. Uh, at the background of the image, there are some tall green trees. Uh,
line by line, and on the left bottom of the image there is a house is a house is located there, having blue paint and having blue paint on the wall and red roof at the top of it. On the right bottom of the image there is a bench, there is a white flat bench placed there, and some cloth or bag of the player uh, is appeared on it. Overall, picture gives a soothing view of a sunny day and an environment to play uh, uh, an environment to play any game like basketball. ग्रेट, वेल डन सर जुनेद। आप अच्छा जो अपने 20 सेकेंड्स लेते हैं, आप उसको थोड़ा बताना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस कि आप उसमें कैसे ब्रेनस्टॉर्म करते हैं? यस मैम, श्योर। वो 20 सेकेंड्स जो मैं लेता हूँ उसमें जस्ट ये देख लेता हूँ कि मुझे किस बारे में बात करनी है, और उस बारे में सिर्फ उसके उर्दू कीवर्ड्स नहीं बल्कि इंग्लिश कीवर्ड्स को ट्राई करता हूँ कि वो मेरे जहन में आ जाए, ताकि फिर जब मैं बात करने लगूँ तो वो एक कीवर्ड को उठाऊँ और उस पर एक सेंटेंस बोल दूँ, और जो भी फिर मतलब माइंड में जो भी सेंटेंस बन रहा होगा वो सेंटेंस बोल दूँ, फिर अगला कीवर्ड उठाऊँ और उसके बाद उस पर सेंटेंस बना के वो बोल दूँ। ठीक है, कीवर्ड से आपका मतलब है कि जो कैरेक्टर्स हैं मेन, जैसे ये लड़का यहाँ पे एक कैरेक्टर है, इसके अगेंस्ट आपने बोलना है, पीछे आपको बैकग्राउंड में वो पाम ट्रीज नजर आ रहे हैं, उनके बारे में आपने बोलना है, इस तरह से। यस मैम, एग्जैक्टली। मतलब दो चीजें देखनी है, एक करेक्टर्स और दूसरी ऑब्जेक्ट। जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं पहले उनके बारे में डिस्कस करना है, और उसके बाद जो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में, और करेक्टर्स को ऑब्वियसली सबसे मेन पे सबसे पहले ही डिस्कस करना ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। से आई डोंट नो, मेरी यही स्ट्रेटजी इसके लिए, फोटो के लिए यही स्ट्रेटजी बेहतर रहती है। तब आप 90 सेकेंड्स में उसको कवर अप कर सकते हो, एंड इवन 90 सेकेंड्स से ज़्यादा भी आप बोल सकते हो। तो जस्ट ये होता है कि फर्स्ट में आई थिंक थोड़ा सा आपको टाइम लेना चाहिए। जिस तरह से आप 20 सेकेंड्स ले रहे हैं, आप उसको कुछ सेकेंड्स तक अपना माइंड जो है वो प्रिपेयर करें, फ़ौरन ना बोलें, क्योंकि जब हम फ़ौरन बोलते हैं तो फिर हम वो हमारे माइंड में उस तरह से नहीं, वो क्योंकि आइडिया स्ट्रक्चर्ड ही नहीं होते तो हम सही बोल नहीं पाते हैं। सो आई थिंक योर अप्रोच इज़ वेरी गुड कि आप थोड़ा टाइम लेते हैं एंड देन यू जस्ट कीप इट आउट। है। थैंक यू मैम। और मेरा क्वेश्चन भी है। Madam, and it's 8:53. So, सर सिकंदर, आप चाय लेना चाहेंगे? यस मैम। आप करना चाहेंगे प्रैक्टिस प्लीज? यस मैम, जरूर। Okay, sure. The image depicts a young man in mid-air performing a basketball dunk on an outdoor basketball court. He is shirtless and wearing blue shorts with a colorful pattern, as well as black and red sneakers. In the background, there are towering trees and a crystal clear sky. ठीक हो गया, ठीक हो गया। And, इसके अलावा हमें एक बेंच नजर आ रहा है, वाइट बेंच। बाकी ये जैसे सर जुनेद ने एक्सप्लेन किया कि एक हाउस है पीछे जो कलर में पेंटेड है एंड रेड उसका टॉप है। Bullet answer together. Very moving actually. मैम एक क्वेश्चन है मेरा। Yes, yes, sure. मैम, स्पीकिंग के दौरान जब कोई आइडिया माइंड में नहीं आ रहा होता और वहाँ पे हम स्टक हो जाते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है या इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है और इसकी प्रैक्टिस?
This is natural. I can't say it's normal, it's natural. लेकिन yes आपको फौरन अपने आप को इसमें लेकर आना है, इस जोन में. जैसे अभी आप पिक्चर एक्सप्लेन कर रहे होते हो तो एग्जैक्टली वो हम आइडिया जब सोच रहे होते हैं तो कहीं कहीं हम भूल जाते हैं. बट आपके पास एक लिमिटेड टाइम है तो फौरन अपने आप को आप इस जगह पे लेकर आए. एंड दिस इज नेचुरल, ये होता है. मैम एक और मशवरा भी चाहिए था. मैंने जुलाई के स्टार्ट से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की प्रैक्टिस स्टार्ट की है, और क्योंकि मेरी पार्ट टाइम जॉब भी है इसलिए मुझे मतलब मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा. बट जो डिओलिंगो के टेस्ट हैं उनको मैंने परफॉर्म किया है. तो आज तीसरा टेस्ट था और मेरा जो स्कोर आया वो आया 130 to 140. तो क्या मुझे 28 या 29 के लिए गोल सेट कर देना चाहिए कि 29 अगस्त को मैं इस टेस्ट में अपने सर जुनैद, आई थिंक आप दे सकते हैं. एज फार एज आई हैव ऑब्जर्व्ड यू, आप दे सकते हैं. लाइक कोई Duolingo is not like as tough as IELTS. हाँ थोड़ी ट्रिकी है जिस तरह से इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, IELTS के जैसे ही है बट इट्स ऑल अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट. सो थोड़े से इसके टैक्टिक्स, जैसे AI बेस्ड है तो हमें वो बोलना इस तरह से है कि ताकि AI को समझ आए कि अच्छा हम क्या बोल रहे हैं, ताकि क्योंकि उसने ट्रांसक्राइब करना है. बाकी यस, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. एंड सर सिकंदर ने भी देना है. एंड इंशाल्लाह हमारे सारे जो स्टूडेंट हैं, मैंने यही सजेस्ट किया था कि बस बिकॉज दिस इज द लास्ट वीक, दिस इज 6th वीक और ये लास्ट वीक है. सो इसमें जितना किसी कोर्स के अंदर, क्योंकि हम बाद में डिसिप्लिन नहीं रहते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू गाइस. आप देना चाहते हैं तो जरूर दें. आपके क्योंकि जो स्कोर्स आते हैं वो यूजुअली मीडियन ही, एवरेज ही आता है जो आपके स्कोर्स होते हैं. लेकिन टेस्ट आपका डिफरेंट होता है. जो आपका रिजल्ट टेस्ट होता है वो प्रैक्टिस टेस्ट से, एज फार एज माय एक्सपीरियंस इज कंसर्न, तो प्रैक्टिस टेस्ट से भी डिफरेंट होता है. सेंस मतलब वो डिफिकल्ट होता है या इससे भी ज़्यादा इजी होता है? डिपेंड करता है. मुझे तो इतना लाइक मुझे नहीं लगा था, मुश्किल नहीं लगा था. इवन ट्रेंड्स का टॉपिक आया था तो बस आपने बोलना है. जस्ट डोंट अस्यूम कि आपने ना एक रिसर्च साइंटिस्ट बन के वहाँ पे आपने कुछ बोलना है या इस तरह से कुछ चीज़ होनी है, क्योंकि तब आपका दिमाग जो है ना वो बिल्कुल बंद हो जाता है. बिकॉज यू आर नॉट ए रिसर्च साइंटिस्ट एंड आपको दुनिया भर का नॉलेज नहीं आ सकता. सो आपके पास उन्होंने आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग ही आपको दिया हुआ है. सो आपने जस्ट speak in an improved form, not a perfect form. ठीक है, हम अपना सेशन एंड करते हैं आज. एंड कल फिर हम इसको इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट्स 8:58 और नेक्स्ट सेशन होने वाला है. सो थैंक यू गाइस फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़ मैम.